ये बैक इन इस्तांबुल, बहुत ही मज़े की सिटी है। इस तरह का स्पाइसी खाना मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आई एम अ हैप्पी मैन टुडे। Bagune yiyeceğiz. Also, and to all our friends and viewers around the world, welcome to your favorite YouTube channel, Into Spices. Friends, आज माशाल्लाह जुम्मे का दिन है। सबसे पहले तकसीम स्क्वायर में इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मज़े की खानों की जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद आज के सफ़र का बाकायदा आगाज़ करेंगे in the search of taste, जायका and ज़ौक़ of Istanbul. Let's go. İş sahibi kardeşlerim, değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, çalıştırdığınız insanları da görüp gözetmemiz lazım. Just finished prayers, and one thing that I'm going to miss about Istanbul really is these grand mosques. उनके अंदर नमाज पढ़ने का जो एक सुकून मिलता है, उसकी अलग ही वाइब होती है. You know, like you just get this whole spiritual connection. एक अच्छी सी अंदर से feeling आती है. There's lots of other things as well. I mean, the wet burger, for example, Taksim Square का इस्तिक़लाल की vibe. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. But regarding the food, yes, there were some बड़े मज़े के खाने खाए हमने यहाँ पे. But one thing जो एक होता है ना कि कुछ ऐसी dishes होती हैं जो आपके दिमाग में engrave हो जाती हैं. So I think for me, what has been engraved in my mind for now, अभी भी कुछ दिन और बाकी हैं हमारे तुर्की में, but for now अब तक की सबसे बेस्ट डिश जो मैंने खाई है is the wet burgers at Taksim Square. I mean, वो जो स्टीम करके बर्गर बनाते हैं is something else. काफ़ी सॉफ्ट होता है, मज़े का होता है. अभी होटल में जा रहा हूँ फिर से बिकॉज मस्जिद में जाना था, so I didn't pick up my bag. तो बैग उठाना है, उसमें कुछ बैटरीज वगैरह पड़ी हैं, वो उठा के फिर निकलते हैं और देखते हैं आज का हमारा सफ़र कहाँ लेके जाता है हमें. सो द प्लान इज़ कि इस वक्त हम जा रहे हैं गलाटा पोर्ट पे. वहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ हैं, दे लुक रियली गुड. पिक्चर्स वगैरह देखिए उनकी. आइसक्रीम है वहाँ पे, कॉफ़ीज़ वगैरह हैं. सो थोड़ा सा हल्का फुल्का दिन का स्टार्ट करते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ लाइक गेटिंग द इंजन रनिंग. कड़ककोई पे उतर के वी टुक द जो स्ट्रीट कार होती है इनकी, T1 street car, T1 street line, and we got off at a stop which is near the Galata Port, Tophani. I think that's how you pronounce it, Tophane. That's the stop if you want to go to, like some of the sites over here. And again, it's near the Galata Port. हर तरफ यहाँ पे palaces वगैरह काफ़ी हैं. So I think this is one of the palaces over here at Tophane Palace, it could be. Then there is over here this water well, कह लें. It's one of those oldest पानी पीने की areas कह लें, which was built in the 17th century apparently. And that over there is the Istanbul Modern Art Museum. So on the Galata Port, there's this little alley with a lot of cafes and stuff. One thing that I liked over here, outside the shops, they've actually put the plates of the kind of food that they're serving. So it makes your decision making a little bit easier. They keep the food outside displayed. So you can just point. If you can't read the menu, you can just point towards the food and say, I want to have this. It looks pretty interesting. We've got like nice burger action going on over there. A lot of people sitting over here, chilling, trying to take a break from the sun. A lot of tourists come over here. So I'm looking for something where, थोड़ा सा chill कर सकें थोड़ी देर के लिए, because it's too early to be having a heavy lunch. So after walking around for a bit, we ended up at the Galata Port over here. Looks pretty good, looks pretty modern, kind of. It's got that modernish vibe to it. I can see the, like Bosphorus in front of me. And again, we're at the port, the Galata Port. There was a bit of a security asking, about the cameras and stuff. But all in all good. The views look really beautiful over here. So you can see Asia over there and
Europe over there. Asia and Europe, beach mein, Bosphorus. So we've got Salt Bae over here. Should we try it out? Let's try out Salt Bae as well. Check out what the fuss is about the burgers of Salt Bae. So right now we are at Salt Bae Burger. Going to be checking out the making process of the burger. I can see some burgers being made over here, and that's where all the magic happens on the grill. Ooh, look at that juice. Nice. That looks interesting, man. Ooh, juicy, juicy, juicy. Ooh, look at that shot. Is that beef? That smells really nice. Yeah, it's so tasty, so juicy. It's tasty and juicy, yeah? Yeah. Just look at the juices oozing out of the burger. Amazing. Going to be trying out the traditional Salt Bae burger. Again, as I always say, if a dish has the name of the restaurant in it, उस dish को order करना ज़रूरी हो जाता है. So Galata Port पे है, Salt Bae के restaurant पे है, Istanbul में है, Turkey में है. Let's order Salt Bae burger. This is the black Salt Bae burger. Black bun hai with sesame seed, and because they don't want to get your hands dirty, they even give you a pair of black gloves जो आप अपने हाथों पे डाल के उसके बाद burger को enjoy करें. So इस burger को खाने के लिए भी जो है special तैयारी करनी पड़ती है. You have to get dressed to enjoy this burger. I'm excited. यार इसका juice level check करें. Already I've just touched it and the juice is just already on my gloves. मज़ा आने वाला है. Hopefully this is going to be expectations high. Yeah. Let's try. First bite, Salt Bae burger. Bismillah. Bun, very crispy, very tasty, very fresh. Meat, next level meat है. Not juicy meat है. It's got a little bit of taste of थोड़ा सा lamb का fat का taste आ रहा है. And that's what they do over here. Turkey में मैंने देखा है. Even if it's a beef dish, थोड़ा सा lamb की मिलावट होती है उसके अंदर. But overall, I mean, excellent है. अंदर में full caramelized onions, grilled cheese, and a thick burger patty. Good stuff. Again, when you come to places like this, which is like like a modern kind of shopping area, you kind of see different styles of like construction, the old traditional like the Grand Bazaar and the Spice Bazaar and stuff, and then you got the ultra modern shops over here. It's kind of like giving that Dubai JBR kind of the walk vibes over here. And crossing roads is like a big game over here. It's just chaos. वही कराची वाला हाल है in a way. But one thing is good that they do stop when they see pedestrians in front of them. They do put on their brakes, so I guess that's good. Especially when you got cars like doing U-turns, cars coming in from left, right, up, down, all directions. It's a bit of a challenge crossing roads here. So viewers, थोड़ा सा घूमने घुमाने के बाद वो एरिया हमने एक्सप्लोर किया एंड अगेन कुछ मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे गलाटा पोर्ट पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. वी हैड द सॉल्ट बे बर्गर जो कि बहुत ही मज़े का था. सो देन वी टुक like one of the buses 28T एंड देन वी गॉट आउट एट बेसिकतास मैदान. बेसिकतास मैदान पे हम लोग थोड़ा सा चलने के बाद वी हैव कम टू दिस प्लेस विच अगेन इज़ वन ऑफ दोज वायरल प्लेसेस ऑन सोशल मीडिया. अगर आप इस्तांबुल आते हैं तो आई वुड से pay it a visit because this person social media पे काफ़ी छाए हुए हैं. Baruthane Pilavcisi, I think that's how it's pronounced. Baruthane Pilavcisi. This person is very famous for his mustache style. काफ़ी viral हुए हुए हैं. And इनकी जो एक tagline है Bugune ye CCC something which basically means what is for food today. खाने में आज क्या है. So आज check करते हैं इनका कि खाने में आज क्या है.
So I can see a lot of rice over here with chickpeas. And this is one thing that this person is famous for, his rice with the chickpeas. And then you can add the different toppings on it. Three fresh ayran, my friend. Okay. And then can we have one bowl of rice with chicken curry? Thank you, H. Okay, bye-bye. This guy, I don't know what his name is, that says, you know, like famous wall of fame. A lot of pictures over here with a lot of people. And how do you say the name of the place? Baruthane? This Yeah. Baruthane Pilavcisi. Baruthane Pilavcisi. Pilavcisi. Bugün Bugün ne Bagune yiyeceğiz? ये चीज़ बगुन ने ये चीज़ गुड ये अपने राइस के लिए और अपनी मूंछों के स्टाइल की वजह से काफ़ी फेमस है। अगर टर्की के टॉप इन्फ्लुएंसर की बात की जाए तो उसमें इनका नाम आता है। ही इज़ गॉन वायरल बिकॉज ऑफ हिज जो मुस्टैच का स्टाइल है, फिर जिस तरह से खाने बनाते हैं शो करके, उसकी वजह से काफ़ी फेमस हो गए। इनकी जो मेन डिश है इज़ द राइस, जिसमें चने डले होते हैं। उसके बाद आप ऊपर से कुछ और टॉपिंग्स कर सकते हैं। इसके ऊपर चिकन करी होती है, इनके पास बीफ है, मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं, येलो दाल है, रेड लेंटल दाल है। सो यू कैन यू नो लाइक पिक योर काइंड ऑफ मिक्सचर दैट गोज़ ऑन टॉप ऑफ द राइस। सो थोड़ा सा चलने फिरने के बाद काफ़ी भूख लग गई थी, तो आई ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग फूड एंड आई फॉरगॉट टू हिट रिकॉर्ड होता है। एंड दिस इज़ व्हाट द राइस लुक्स लाइक। बड़े थिक इनके चावल होते हैं, इट्स नॉट लाइक हमारे राइस की तरह से। इनके जो टर्किश राइस जो होते हैं, बुल्गर राइस जिसे कहते हैं, काफ़ी थिक होते हैं। अंदर में चना है। चिकन इनकी काफ़ी फ्लेवरफुल है, क्वाइट जूसी, जिस तरह से घर में जिस तरह से खाने बनते हैं हमारे, उस टाइप का टेस्ट है। सो टर्की में कबाब्स वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा जब आपका दिल भर जाता है, सो यू नीड दैट काइंड ऑफ यू नो लाइक देसी टच। उसके लिए दिस प्लेस आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे आपको जो चावल है, जो चिकन है, उसका घर वाला थोड़ा सा टेस्ट आएगा। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पे रेड दाल भी ली थी, जो कि मैंने डाली भी है इसमें चावल में, जिसकी वजह से अगेन द राइस लुक्स लिटिल बिट रेड। बरूथाने पिलावसिसी के चावल विद योर मर्ज़ी की टॉपिंग्स। वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, दाल हो गई, ठीक है, सब्ज़ी भी थी इनके पास, बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, चिकन टिक्का की बोटियाँ थी वो भी ले सकते हैं, ग्रिल चिकन बेसिकली वो भी ले सकते हैं। सो या जी हमारा लेमन शॉट, ज़रूरत नहीं है बट जब सामने लेमन हो तो यू नीड टू एंजॉय। टर्की में हर गली में आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, आई थिंक दे रियली लाइक टू एंजॉय देयर नाइट लाइफ बिकॉज 5 बजे के बाद इन बाज़ारों में एक अलग ही रौनक लगना शुरू हो जाती है, एक अलग ही वाइब हो जाती है। सब लोग 5 बजे के बाद निकलना शुरू होते हैं यहाँ पे। हो सकता है बिकॉज सुबह में इतनी गर्मी होती है। Tostçu Mahmut से we have taken this amazing looking grilled sandwich जिसके अंदर चिकन है, जिसके अंदर टोमेटोज़ हैं, चीज़ है खूब सारा। एंड इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम इनसाइड, ये चेक करें, ग्रिल चीज़ चेक करें इसका, ब्यूटीफुल। Tostçu Mahmut पे grilled cheese sandwich with chicken, with tomatoes and egg. Let's try. First bite, Bismillah. और उन्होंने शक्ल देख के पहचान लिया था कि भाई आप स्पाइसी खाते हो। मैं जी स्पाइसी खाते हैं। देखो कौन से लेवल का स्पाइस चाहिए, लेवल 1, 2 और 3। आई जस्ट वांटेड टू प्ले इट सेफ, मैं कहा 2, बट खूब सारी चिली डाली उन्होंने व्हाइल इट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द ग्रिडल। जब चिली जो है ग्रिल हुई है चिकन के साथ, जो उसने नाक पे हिट किया, मैं कहा यार गलत तो नहीं बोल दिया स्पाइसी, बट बहुत अच्छा टेस्ट है। और तुर्की में इस तरह का स्पाइसी खाना मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो आई एम अ हैप्पी मैन टुडे। बहुत ही मज़े का सैंडविच है, रियली रियली नाइस। बेसिकतास में टोस्चु माहमूद हाईली रिकमेंडेड। अगर आप इस एरिया में हो ज़रूर खा के जाइएगा बिकॉज दिस प्लेस हैज़ बीन रनिंग सिंस 1973। टोस्चु माहमूद वंस अगेन टोस्चु माहमूद पे हैं, बेसिकतास एरिया में हैं, इस्तांबुल में हैं, तुर्की में हैं, enjoying the famous grilled
chicken sandwich with tomatoes, with eggs, with cheese, and extra level of spices, red chili. Hashtag next level. So one thing while you're in Istanbul, I would suggest getting used to the metro system over here, especially if you're here for a few days or a week or something, more than a week. Just get used to the metro system because it's pretty convenient to take a metro and go to different places. Because as you can see, the traffic, it's pretty congested. It can get pretty congested, especially at times when, you know, like offices are getting off and stuff. Otherwise, you're gonna pay good money to get driven around in a cab or something. So जी viewers, तोशु महमूद का सैंडविच खाने के बाद we are back at इस्तिकलाल स्ट्रीट. Again थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद होटल में जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे because tomorrow is going to be a new day, a new adventure. आज हमारा आखिरी दिन है इस्तांबुल में and had a great time. अब इंशाल्लाह यहाँ से होटल से सीवी के पार्क बॉस्फोरस से चेकआउट का टाइम हो चुका है. पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर चेकआउट करेंगे एंड देन इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम इस्तांबुल एयरपोर्ट टू लंदन हीथ्रो एंड हीथ्रो से इंशाल्लाह टोरंटो पीएसएन एयरपोर्ट. काफ़ी सारी यादें, काफ़ी सारे अच्छे खाने हमने यहाँ पे ट्राई किए, काफ़ी सारी अच्छी यादें बनाई यहाँ पे. A lot of beautiful memories of this really beautiful city. And as someone once said, no pen, words, brushes can describe the true essence, the true beauty of Istanbul. I witnessed that for myself. It's a very lively city, बहुत ही खूबसूरत शहर है and अगर आपको मौका मिले ज़िंदगी में, I would highly recommend that this should be one of the, you know, top places for you to visit because there's so much culture over here, so much good food to eat, there's so much nice places to explore, there's something for everyone. If you're a foodie, you're going to love the food street over here. If you are into resorts and stuff and, you know, like just want to have like a nice relaxing time, then Antalya is there. Shopping के लिए you got, you know, like your the souks, the bazaars over here. काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने के लिए and again हमारा माशाल्लाह ट्रिप रहा 10-12 दिन का which again हमें भी थोड़ा सा कम लग रहा है कि यार और थोड़े से दिन होने चाहिए but have to go back to reality and it's almost time to say goodbye to this beautiful amazing city. So चलते हैं, breakfast करते हैं, उसके बाद checkout का process करते हैं and next station London Heathrow. Breakfast आज करेंगे इंशाल्लाह with a view. Usually when, you know, like we come down for सुबह उठ के तो breakfast area काफ़ी full होता है, so ये view नहीं मिल पाता. You getting a nice, you know, like Bosphorus river view over there in the distance. बड़ा मज़े का लगता है sitting just staring outside at the river and having food. Let's have breakfast, get some fuel in the body. ओके जी, हमारी जो है चेक इन वगैरह हो चुका है. वी गॉट आवर बोर्डिंग पासेस, सिक्योरिटी प्रोसेस एज यूजुअल जो होता है एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल्स वगैरह, पास थ्रू ऑल दैट अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी गॉट आवर बोर्डिंग पासेस एंड इंशाल्लाह अब जा रहे हैं हम लंदन हीथ्रो एंड उसके बाद हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आफ्टर 2 hours ऑफ ले ऑफ एट लंदन हीथ्रो. वी गोइंग टू बी गोइंग टू बैक टू कैनेडा. So yeah, just going to give you a tour of the Istanbul airport. Looks pretty massive. And hello my friend. So yeah, looks like a pretty massive airport. काफ़ी सारी shops हैं यहाँ पे. The airport in itself looks like a big, huge mall. And again, lots of flights going out from here. One of the busiest airports in the world. I guess Heathrow and Dubai के बाद I think so Istanbul का airport का number आता है in one of the busiest airports in the world. We got free Wi-Fi over here. You can scan your passport and you get 1 hour free Wi-Fi. So people are lining up over here at the kiosks to get some free Wi-Fi.
And you know you're at an airport when a box of macaroons costs you 28 euros. So they have got some nice eating places over here. Shake Shack hai, Slim Chickens hai, American Fried Chicken, Carluccio's hai, Italian. And if all the bazaars in Istanbul wasn't enough, they even have an old bazaar over here at the airport. So in case if you didn't go to the bazaars in Istanbul, you can always come over here at the airport to the old bazaar. And they've got a lot of stuff that you can pick up over here. They've got the dry fruits, they've got the baklavas, they've got the Turkish delights, a lot of nuts that I can see over here. Traditional slippers in case if you want to dress up as Aladdin. A lot of souvenirs over here. So Simit's rice है, having the Turkish coffee और जाते जाते एक बार अगर Turkish coffee ना पी तो Turkish coffee के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी. So just picked up a Turkish coffee before boarding the plane. और किसी भी ट्रिप में random security search ज़रूरी है. So random security check गुजरना पड़ता है. Part and parcel of traveling. अब आदत हो चुकी है. Keep your seatbelt fastened whenever you're seated. It must remain securely fastened whenever the seatbelt sign is on. When opening your overhead lockers, please. Right now at London Heathrow Airport, and we're going towards our gate, which is B44. काफ़ी छोटा सा airport है, छोटा सा terminal है for the North American side of things, I guess. So just going there and going to be jumping on a flight to Toronto now. So जी viewers, अल्लाह का शुक्र है, we have landed in Canada. बड़ा ही अच्छा सफ़र रहा Canada से तुर्की. Antalya was amazing, and Istanbul again, an amazing place. Let us know in the comment section if you've got any recommendations of places to visit in Turkey other than Istanbul and Antalya, because ये दोनों जगहें अब कवर हो चुकी हैं. Not in depth. I mean, there's a lot of places to see still in Istanbul, but अगर आपकी कोई recommendations हैं कि तुर्की में, for example, Cappadocia है, Ankara है, और भी काफ़ी सारी जगहें हैं. So if you have any recommendations, do let us know in the comment section. उम्मीद आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, you know the drill. वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. Until next time, stay safe, stay healthy, take care. अल्लाह निगहबान. Welcome to Istanbul. Hello. इंशाल्लाह तो हमारे साथ रहिएगा. Let's go. Kanada'ya selam. Street food, Turkey at its best. अच्छा, wow. Zindabad Pakistan. Pakistan zindabad. भाई की रिव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं भाई के लिए वेट करती हूँ. किसने बनाया? हमने बनाया. Hashtag next level. This is good stuff. Very juicy. Welcome to Titanic Mardan Palace Hotel. Antalya, hoş geldiniz. I hope you enjoyed the video. Happy birthday to Madam Turkiye. I know Taksim people very well because of TikTok. Welcome to Antalya, everybody. इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है. This is a very popular tourist attraction. Smells really nice in there. बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे. Very friendly. Kardeşim Pakistan. Habibi, come to Istanbul. हम लोग कहाँ पे हैं अभी? फिर से बताइए. एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है. तो आप कहाँ जा रहे हैं जी? हमारे नाम नहीं शेफ बुराक की रेस्टोरेंट पे जाएंगे. नहीं करो यार. Oh, that looks nice. अब आया मजा. आप मजा. Hey into spices, welcome. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? Hi into spices. My brother, thank you. Spices high! Into spices. Hashtag next level. मुझे बहुत अच्छा लगा. हमने प्रॉपर 2 दिन घूमा
और बहुत अच्छे जगह भी घूमा और भाई भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना कनाडा से इधर तक आके तुर्की में ये वीडियोस बनाया, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। और इधर इंटू स्पाइसेस को और मैं इधर सबको कह रही हूँ ज़रूर इंटू स्पाइसेस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मज़ीद फूड ब्लॉग के लिए भाई की चैनल देखता है। Thank you very much. Appreciate that, sister. Until next time, stay safe, stay healthy, take care. #next level. And Allah Nigeban. Bye bye.